Hello students, welcome to Affinity Digital. Let us discuss the solution of full length test number 8. So let us begin with the first question. On the basis of given comparison of chordates and non-chordates, select the incorrect one. तो ये NCERT का direct एक distinguish between दिया हुआ है between the non-chordates and chordates, and according to this, the option will be, the incorrect option will be heart is ventral और chordates में दिया गया heart is dorsal, जबकि ये केस उल्टा होता है, रिवर्स होता है. chordate के केस में heart ventral side में होता है. Moving to the next one, which of the following is the feature of the phylum represented by animal given below? So ये जो structure है वो pleurobrachia का है, that means ctenophora, and their structure is, their characteristic feature is the bioluminescence, कि वो emit कर सकता है light अपने body से, जबकि bilateral symmetry भी नहीं होगा, organ system नहीं होगा, direct development भी नहीं होगा, इनमें larval stage exist करता है. Question number 153. Choose the option in which the genus name, its two character and class are not correctly matched. यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मिक्जीन, जो कि एक एक्टोपैरासाइट है, करेक्ट है, उनका सर्कुलर माउथ पार्ट होता है एंड दे बिलोंग टू द क्लास साइक्लोस्टोमाटा. कैरकेराडॉन दैट इज शार्क, पोइगोलोथाम होते हैं, ओपेरकुलम उनमें एब्सेंट होते हैं एंड क्लास इज कॉन्ड्रिक्टाइस. रोहू फिश सेक्सेस आर सेपरेट, करेक्ट है. Skin with saccular scale, that is also true, and they belong to the class Osteichthyes. Then is the ichthyophis, they are tetrapod, बच्चों नहीं होगा, they are limbless amphibians, and tympanum is present, right? So ये हो गया हम लोगों का incorrect option. Moving to the next one, what are the terminal branched end of axon known as? The axon is known as synaptic knobs. Choose the correct option with respect to cockroach. With respect to cockroach, respiration tracheal system correct option के लिए पूछा गया है. Porometabolus ये 13 times होता है. Muscular heart, it is not one chambered, it is also 13 chambered heart. Excretion is uricotelic, ना कि ammonotelic. So correct option is 1. Which one of the following does not consist the diffusion membrane? तो पहले does not में mark कर देते हैं. Thin squamous epithelium, ठीक है. Cuboidal epithelium facilitate नहीं कर पाएगा diffusion of gases, तो ये हो गया incorrect option. बाकी basement membrane, endothelium of the blood capillary, true options है. Which one of the following does not consist of diffusion membrane? This has been repeated, I suppose. 157 यहाँ पे रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पेपर ठीक है. Assertion reasoning, exoskeleton of arthropod have a complex polysaccharide called chitin. This complex polysaccharide are mostly heteropolymer. No, it is not heteropolymer, it is homopolymer. तो इस हिसाब से इस assertion is correct, but reason is false. What do we call the process when more than one adaptive radiation occur in a single geographical space? अगर एक से अधिक adaptation हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? Convergent evolution कहते हैं, क्योंकि adaptive radiation का मतलब होता है origin same, the variation will be there. अगर एक एरिया में geographically जो isolated एरिया है वहां पे अगर इस टाइप का बहुत सारा एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है, उनमें से कुछ वेरिएशन अपने आप को एक जगह में क्या करेंगे? कोशिश करेंगे अडाप्ट करने के लिए और सिमिलर फीचर्स डेवलप करेंगे. दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 160. इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक कैविटी डिक्रीजेस. बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक कैविटी डिक्रीज होने से नहीं होगा इंस्पिरेशन. वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी इंक्रीजेस. यस, जितना वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर वहां पे घट जाएगा, जिससे कि इंस्पिरेशन विल टेक प्लेस. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज होने से तो बाहर निकल जाएगा. डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स नहीं. इंस्पिरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस, तो रिलैक्सेशन नहीं होता है इस दौरान. द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विथ
the closure of the AV valve, that is bicuspid and the tricuspid valve. So, question number 162 in the diagram given below, identify A, B and C. तो बच्चों ये रहा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ये जो सप्लाई कर रहा है, दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो दिस इज डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा. ये वापस जा रहा है इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट वाया वेना केवा. दिस इज वेना केवा. राइट साइड से वो जाएगा टू द लंग्स. दिस इज द pulmonary circulation. This is systemic circulation. Yes. So अभी यहां से जो deoxygenated blood निकल रहा है, this is through pulmonary artery, which is taking blood away from the heart. ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है. एंड वो वापस आ रहा है, मेकिंग द ब्लड ऑक्सीजनेटेड. तो ये वापस आ रहा है, इट इज वाया pulmonary vein. सो ऑप्शन 1 इज डॉर्सल एओर्टा, दोनों में दिया हुआ है, ठीक है. आगे देखते हैं. बी विल बी वेना केवा, करेक्ट दिया हुआ है. डी इज pulmonary artery, this is the pulmonary artery, correct है. And C is pulmonary vein. So option 3 is the correct one. Okay, now moving to the next one. Statement 163, statement 1. The ascending limb of Henle's loop is permeable to water but allows the transport of electrolyte actively. यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया. द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट व्हेन पास अपवर्ड gets diluted due to the passage of the electrolyte. सोडियम क्लोराइड निकलने से जो यूरिन है या फिर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, ठीक है. और ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहां पे मूव किया, मेडुलरी फ्लूइड में. सो दिस इज ट्रू, मेडुलरी फ्लूइड में वो मूव आउट कर जाता है. एंड फाइनली वी आर गेटिंग दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट but statement 2 is incorrect. Okay, next one. Read the following statement. A single U-shaped bone called hyoid bone is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull. ठीक है. Pectoral and the pelvic girdle bones help in the articulation of the lower and the upper limb respectively with the axial skeleton. तो यहाँ पे गलत क्या दिया हुआ है, पेक्टोरल गार्डल एंड पेल्विक गार्डल. पेक्टोरल गार्डल ऊपर पार्ट में होता है, तो वो ऊपर वाले लिम्स को ज्वाइन करेगा, तो लोअर शुड बी अपर. और पेल्विक गार्डल लोअर के साथ कंसर्न्ड है क्योंकि दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, तो ये चीज तो मेंटेन करना जरूरी है. सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गार्डल मीट डॉर्सली. नो, इट डजंट मीट डॉर्सली, इट मीट्स ventrally. So this is also incorrect. Axial skeleton comprises of 80 bones distributed along the main axis of the body. So this is true. So option A and D, they are the correct option. Correct option choose करने के लिए बोला है. तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि incorrect पूछा गया है या फिर correct पूछा गया है. Now choose the incorrect statement with respect to human rib cage. Each rib is thin, flat bone connected dorsally to vertebral column and ventrally to sternum. ठीक है. It has two articulation surface on its dorsal end and is called bicephalic. Correct. First 7 pair of the ribs is called true ribs. It is incorrect option. Thoracic vertebrae, ribs, sternum together forms the rib cage. So this is also correct. So incorrect में third option होता है. The function of the neurosecretory cells of hypothalamus is to, it secretes hormones. It performs as an endocrine role by secreting hormones. Purpura quadrigemina consists of
mainly 4 round swelling and is located in the dorsal portion of the midbrain. Which of the following hormone interact with the membrane bound receptor and generates the secondary messenger? बच्चों secondary messenger के जो generate करता है वो होता है प्रोटीनस हार्मोन. तो आइए देखते हैं. ये एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन्स है. ये प्रोजेस्टेरोन ये भी स्टेरॉइड है. एस्ट्राडियोल इट इज ऑल्सो अ स्टेरॉइड हार्मोन. तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्लूकागॉन. Which of the following is caused due to the hypersecretion of the thyroxine hormone? The answer is due to the hypersecretion. Hypersecretion में exophthalmic goiter आता है, बाकी सारे hyposecretion होता है. This is hypo, cretinism is hypo, myxedema is also a hyposecretion. Okay, question number 170. All of the following are correct except LH stimulate the gonadal activity and hence called gonadotrophin. Correct, क्योंकि हमें incorrect option जो है उसको ढूंढने के लिए कहा गया है. Pars nervosa produces 6 trophic hormone. No, it doesn't synthesize any hormone. Oxytocin acts on the smooth muscle of the uterus body and stimulate the contraction. Correct है. That causes the parturition process. Low secretion of GH result in the stunted growth, resulting in pituitary dwarfism. That is true. So incorrect is जो posterior pituitary है वो कभी भी hormone synthesize नहीं करता है. Assertion reasoning after implantation. Finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi. The chorionic villi are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. Correct. But one doesn't explain another. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi. Because chorionic villi are surrounded by, not that. It is both are true, but one is not the correct explanation of another. It is option 2. During fertilization in human, a sperm comes in contact with the acellular layer of the ovum, that is zona pellucida. Medical termination of the pregnancy MTP is considered safe up to which trimester of pregnancy? It is the first trimester of pregnancy. What is the disease caused by the deficiency of adrenal cortex hormone? That is Addison's disease. Which of the following does not belong to tracheophyte ancestor? Sphenopsy doesn't belong to tracheophyte ancestor. It belongs to Rhynia ancestor. It belongs to Rhynia ancestor. Moving to the next, origin of the first seed ferns occurred during which period? Fern जो है seed fern, it occurred in the Carboniferous period, क्योंकि Carboniferous period is somewhat related to the Jurassic period. तो उस दौरान seed fern का development हुआ था. All of the following were used in the spark chamber of the Urey-Miller experiment except oxygen, क्योंकि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ यूज किया गया था. Statement 1, a number of the marsupial, each different from the other, evolved from the ancestral stock, but within the Australian island continent. Statement 2, when there is more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, one can call it as convergent evolution. Both the statements are true. Statement 1 is true. Question number 179. Select an incorrect match. Acid in stomach. It is a physiological barrier. Correct. Natural killer cell. Cellular barrier होता है. ठीक है. IgA is an antibody in colostrum. It gives passive immunity to the baby. It is a natural passive immunity. Administration of antitoxin is a active immunity. No, it is also a passive immunity. जो सांप डसने के बाद या फिर अदर टॉक्सिक से एक्सपोज होने के बाद जो लिया जाएगा वो डेफिनेटली पैसिव इम्यूनिटी होगा. तब बॉडी को अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर द एक्टिव इम्यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 180. Transmission of HIV does not generally occur by. Transmission of HIV does not generally occur by
sharing of the personal articles like comb and towels. Then question number 181, match the following and select the correct option. So cyclosporine A is derived from Trichoderma, number 3. Then is statin, number 1, Monascus purpureus. Streptokinase, it is from 4. Lactic acid from Lactobacillus. So the correct option will be 3, 1, 4 and 2 is the correct option. A stirrer in the stir tank reactor primarily facilitates. ये किस लिए स्टारर यूज किया जाता है और स्टीरर यूज किया जाता है? ताकि ऑक्सीजन मिक्सिंग प्रॉपरली हो, यूनिफॉर्मली हो. सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. So question number 183, match the following columns and select the correct option. ये भी और एक match the following है. BT toxin is basically it act as a insecticide. It is 2. RNAi is against myeloid gyne incognitia. Gene therapy will be against, not against, it is for the ADA deficiency, and PCR is used for the routine test of HIV ताकि वो amplify कर पाए HIV जो particles है इन सबको. So it is 2, 1, 4 and 3. 4 and 3 is the correct option. The C peptide of human insulin is removed during the maturation of the proinsulin to mature insulin. It is a part of mature insulin, is incorrect. Responsible for the formation of the disulfide bond, it is also incorrect. Responsible for its biological activity, no, it is also incorrect statement. Which network does the neural system provide? It has point-to-point connection, right? Now, the next question, question number 186. Statement 1, in Annelida, body surface is distinctly marked into metameres. That is true. Nares possesses parapodia, which helps only in swimming and neural regulation, because it helps in swimming but also helps in the respiration process. So statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Okay. Question number 187, correct. Consider the following statement about the respiratory system of frog. Skin acts as a respiratory organ in water only. No, it is not only water but also in the land during the estivation or the hibernation process. Dissolved oxygen is exchanged through the skin by the process of diffusion in water. Lungs are paired and present in the thorax. Gaseous exchange takes place through skin during the hibernation and estivation. So all these three are correct. So statement 1 is only the incorrect option. Question number 188, the part of the human brain responsible for the function like memory, learning and emotion is cerebrum. It is not cerebellum, it is cerebrum. क्योंकि वहीं पे लिम्बिक सिस्टम भी रहता है. ठीक है. The next one is question number 189. A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. So this is directly from NCERT. वो rigid rod straight तरीके से exist नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बाद वो helical बन जाता है. The thread is folded to form a helix. Okay. The next one, which among the following is incorrect about different saccharides? Polysaccharides are used to store food, whereas most of the monosaccharides are used as instant energy. Most कहा है, ज़्यादातर monosaccharide हम लोग use करते हैं for our instant energy, for example, glucose. Most of the polysaccharides are sweet in taste and therefore called sugar. Polysaccharides sweet नहीं होते. Starch can be digested, whereas cellulose cannot be digested. This is true. Because cellulose is made of beta glucose, जबकि starch जो है it is made of alpha glucose. Saccharides are also classified as ketose and aldose. Monosaccharides are ketose and aldose. For example, ketose का example हो गया fructose, जबकि aldose का example हो गया galactose and glucose. So incorrect option is this one. Match the following: earthworm, that is cuticle, frog will be lungs, fish gills, birds and reptiles, sorry, frog को हम लोग रख देते हैं as
What? This is fish, is gills. Frog is moist skin because they can respire with the help of the skin. Birds रख देते for lungs. So it is A, D, B and C. 1 is A, D, B and C. 1, okay, B and C. Yes, this is the correct option. Assertion reasoning. Fibrins are formed by the conversion of the inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin. Correct है. Reason मतलब हम लोग because लगा देंगे, because thrombin in turn is formed by another inactive substance present in the plasma called prothrombin. Although it is correct, but it is not the explanation of the above line. So assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Which of the following correctly explain the function of the specific part of the human nephron? तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला पॉइंट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द पोटाशियम आयन. बच्चों अगर हम ध्यान से देखेंगे डायग्राम को तो वहां पे पोटाशियम आयन का एक्सक्रीशन हो रहा है या फिर बोल सकते हो सिक्रीशन हो रहा है, बट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है. ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट. एफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इट शुड बी इफरेंट. सो ये भी हो गया इनकरेक्ट. पोडोसाइट क्रिएट स्लिट पोर फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू द बॉम्बेज कैप्सूल. करेक्ट है. हेनलीज लूप में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो एज पार्ट द क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज पोडोसाइट. ओके, then question number 194, choose the incorrect statement. The male germ cell undergo meiotic division finally leading to the sperm formation. Male germ cell undergo meiotic division finally, okay, correct. LH triggered the secretion of the testosterone from the interstitial, yes, correct. Menstruation in human female occurs due to LH surge. No, it is not due to LH surge, it is due to the fall of प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन फॉल होने के साथ साथ मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा. द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट्स FSH which causes growth of ovarian follicle. So incorrect statement is statement number 3. All of the following are in vivo fertilization technique except. बच्चों इन विवो मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज्ड होगा. तो अगर हम कहे AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पर्म को अंदर डाला जा रहा है, ठीक है, और बॉडी में जाके स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है. ये तो इन विवो हो गया. IUI नॉट IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर नहीं होगा, इंटर यूटेराइन इंसेमिनेशन. सो दैट इज ऑल्सो सेम विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. एक वेजिनल होता है, एक यूटेराइन होता है. दूसरा गिफ्ट, जहां पे फीमेल बॉडी के अंदर डोनर फीमेल का एग डाला जाता है और इन विवो फर्टिलाइज करने के लिए अलाउ किया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो इन विवो. जो इन विट्रो होता है दैट इज व्हाट ICSI, जो कि बॉडी के बाहर एग को हार्वेस्ट करने के बाद उसको बाहर फर्टिलाइज किया जाएगा. ठीक है, बाय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. व्हाट कंट्रासेप्टिव आर प्लेस्ड अंडर स्किन? इट इज implants. Who discovered the blood circulation in human body? It is from the chapter Human Health and Disease, that is William Harvey. Read the correct statement and choose the incorrect statement only. Typhoid fever could be confirmed by vital test. Rhinovirus infect nose and respiratory passage but not the lungs. Correct. Plasmodium malady causes the most serious and fatal malignant. No, it is Plasmodium falciparum. Sporozoite form Plasmodium and are stored in the stomach of female Aedes mole. So incorrect हो गया C and D. Fourth option is the correct one. Which of the following does not belong to Hardy-Weinberg principle? Frequency remain fixed through generation. Yes, Hardy-Weinberg ने यही कहा था कि frequency generation after generation same रहेगा. Used algebraic equation जैसे कि A plus B whole thing square का equation इन्होंने use किया था. Then allele frequency varies from species. ये species को consider नहीं किया था, एक ही members, एक ही species के members को consider किया था. So this is, और वैसे भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है.
So this is not included under Hardy-Weinberg principle. Gene pool remain constant. This is also with respect to Hardy-Weinberg principle. So incorrect हो गया. That is point number 3. Gene drift occurs when gene migration occurs by chance. यहाँ पे भी माइग्रेशन होता है, लेकिन ड्रिफ्टिंग मतलब ये वॉलेंटरी नहीं होता है, बाय चांस, बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी एंड ऑल. So with this we have ended our session here. Thank you.